Listen, if we have the example, verify 2 and 2 minus 2 and minus 3 by 2 are the zeros of cubic polynomial this, and then verify the relationship, and then verify the relationship between zeros एंड कोफिशिएंट. तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पर इनको सेटिस्फाई कराना है कि दैट दीज आर द जीरोस. फॉर जीरोस वी हैव रेड इन 9th क्लास दैट इफ x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ p2. अगर हम p ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12 16 plus 12 minus 16 minus 12 which equals to 0. So x is equals to 2 is the 0 of px. Similarly, you can verify all the other numbers, that is minus 2, minus 3 by 2. If p of minus 2, when you put the value of x is equals to minus 2, it यहाँ से भी आपका क्या आएगा, p of minus 2 must be 0. And when x is equals to minus 3 by 2, सिमिलरली जैसे मैंने ये सॉल्व किया उसी तरीके से आप इन सबको सॉल्व करेंगे कि p of minus 3 by 2 and it also must be 0. ये दोनों वैल्यूज also zeros होंगी. That's why these are the zeros of the polynomial. It means alpha is equals to 2, beta is equals to minus 2 and gamma is equals to minus 3 by 2. To verify the relationship, between zeros and the polynomial, what we have to do, first of all we have to find the value of now alpha plus beta plus gamma. It is 2 plus minus 2 plus minus 3 by 2 means 2 minus 2 minus 3 by 2. 2 and 2, these are reduces to each other, that will be the value minus 3 by 2. Now from the polynomial, यहाँ इससे पहले ही लिख सकते हो, इसके बाद भी लिख सकते हो. इन पी एक्स a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to minus 8 and d is equals to minus 12. So p upon a is equals to 3 by 2 and that will be हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस, so alpha plus beta plus gamma is equals to minus 3 by 2 is equals to minus b upon a. पहला एक वेरिएबल आपका वेरीफाई हो गया. सेकेंडली व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा. अल्फा बीटा यानी अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 इंटू माइनस 2 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कर ली 2 इंटू माइनस 2 प्लस बीटा गामा यानी माइनस 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस गामा अल्फा माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. इट इज 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 2, it is 3, 2 divided by 2 and minus 3, it equals to minus 4. So over here now c upon a is equals to, what is the value of c? Minus 8 divided by a2 which equals to minus 4 is equals to alpha beta, beta gamma, gamma alpha. So it will also be verified. Next, alpha beta gamma, alpha is 2, beta is minus 2 and gamma is minus 3 by 2. 2 divided by 2 and minus minus plus 3 to just 6. Also d upon a is equals to minus 12 divided by 2 which equals to minus 6. तो यहाँ पर वैल्यू प्लस 6 है और यहाँ माइनस 6 यानी प्लस 6 की वैल्यू हो गई माइनस डी अपॉन ए which equals to minus d upon a. So alpha beta gamma is equals to minus d upon a, hence verified. This is the way how to verify the relationship between coefficients and the zeros. Clear? And another example, how to use the identities या relationship
in various types of question. This is the cubic polynomial, and in the cubic polynomial you have to do the question like this. Now another example to use the relationship and between coefficients and zeros. Another example is if alpha beta, example number ये 10 है in your book at page number 85. If alpha beta are the zeros of x square plus 3x plus 6, then find 1 upon alpha, alpha upon beta, beta upon alpha, and अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ पर ये भी निकलवा सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा. Various type of questions are based on this type of topic. Means आपको क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया है and alpha beta are the zeros. You have to find any type of value like this. So for example, if px is equals to x square plus 3x plus 6, it means a is equals to 1 because the coefficient of x square is equals to 1, b is equals to 3, and c is equals to 6. So alpha plus beta is equals to minus b upon a, which equals to minus 3 upon 1 is equals to minus 3. This is the equation number 1, and again alpha beta is equals to c upon a, means 6 upon 1 is equals to 6, and this is equation number 2. First of all, we have make the equations alpha plus beta and alpha beta. Now what we have to find out in part A, we have to find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. What is the process? First of all, we have to take the LCM alpha beta. अल्फा बीटा लिख लीजिए या बीटा अल्फा लिख लीजिए, बोथ आर द सेम थिंग्स. अल्फा बीटा, अल्फा इज मल्टीप्लाइड टू हियर अल्फा स्क्वायर, बीटा इज मल्टीप्लाइड टू हियर बीटा स्क्वायर. नाउ we have the value of alpha beta over here, but alpha square plus beta square. So to make this, 2 alpha beta is added to here, and similarly 2 alpha beta is subtracted. Same value is added and same value is subtracted. So this value is converted into alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha beta. Now we have the value of alpha plus beta. So minus 3 whole square minus 2 into alpha beta is 6 divided by alpha beta is 6. Minus 3 whole square is 9, minus 6 to the 12 divided by 6, which is minus 3 upon 6. So answer is minus 1 by 2. That is the value of first part, alpha upon beta plus beta upon alpha. Similarly, if you have to find the value of पार्ट 2, यानी कि ये दो वैल्यूज तो हमारे पास हैं ही. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आगे की दूसरी आइडेंटिटीज को भी सॉल्व करना है. पार्ट 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अगेन जैसे हमने पहले किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. We have to add 2 alpha beta and subtract the same value 2 alpha beta. So the value this is alpha plus beta is equals to is whole square minus 2 alpha beta, and alpha plus beta is minus 3 whole square minus 2 into 12, 2 into 6, 9 minus 12, which is equals to minus 3, and that is the answer of alpha square plus beta square. Again we have the value of, we have to find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. So what we have to do, again we take the LCM of both the numbers and find the values. C part, 1 upon alpha plus 1 upon beta, we have the LCM alpha beta, beta plus alpha, alpha plus beta is minus 3, alpha beta is 6, which is minus 2. Similarly, we can do the next part D, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. हम अभी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अल्फा बीटा हमें गिवन है
और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके we can find the values of the given relationships. This is the way how to find the various values based on alpha beta. Now if you have to find a quadratic polynomial by the given values, if we have sum of zeros, if we have alpha plus beta, value of alpha beta yani sum of zeros, and product of zeros yani value of alpha beta, product of zeros, then we can form a polynomial. Means अगर हमें polynomial form करना है तो formula क्या है, k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, and we have to use this formula to form any polynomial. For example, like example number 16 in your book, page number 93. Example 16, page number 93. There is an example. Page number 89, sorry. Page number 89. There is an example, find a quadratic polynomial. Question में आपसे क्या कहा है? Find a quadratic polynomial. Quadratic polynomial if each of the given numbers as the sum of, if each of the given numbers, इस लैंग्वेज को आपको समझना है कि ये नंबर कैसे दिए गए हैं. Each of the given numbers as the product, as the sum and product of its zero respectively. एंड आपको एग्जाम्पल को जिस तरीके से दिया है 1,1, 2/3, -4 एंड सो ऑन. एक एग्जाम्पल बुक का है और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है. अब यहाँ पर पहले लिखा है सम, यानी ये वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोस. फिर लिखा है प्रोडक्ट, यानी ये वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज हो रहा है. sum and product of zeros respectively, yani first value is sum of zeros and second value is product of zeros. It means in part 1 alpha plus beta is equals to 1 and alpha beta is equals to 1. Both the values are 1 and 1. We have to substitute these values in the given formula. This is the formula, and px is equals to k x square minus अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस लैंग्वेज वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे. नाउ के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज 1, सो इट इज माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड दैट इज आंसर. सिमिलरली अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या गिवन है हमें. इन सेकंड पार्ट alpha plus beta is equals to 2/3 because this is the first value, and alpha beta is equals to -4 because this is the second value. So px is equals to k x square sum of zeros into x plus product of zeros, k x square minus sum of zeros 2/3 x product of zeros -4, and plus minus is always minus. That's why in the next line you will convert this sign to minus, and this is the answer. This is 1 marks question, and sometimes if the question is given in the question paper, you have to do it very easily. You have to solve the question very easily according to this format.